Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to Chase Academy. Students, this video is about introducing you with the weekly test number 3. I hope that you have done your previous 2 weekly tests and you have performed better. Students, this is our weekly test 3 of unit number 2, and this week we have discussed all these 5 different SLOs in various lectures. Number 1, we discussed demonstrate knowledge and application of parts of speech in oral and written communication in varying degrees of complexity. और इसमें हमने pronouns को जिक्र किया था और different types of pronouns को हमने discuss किया था, possessive pronoun, demonstrative pronoun, relative, etc. तो वो सारे pronouns को इस most of them will be tested in this test. All right. Next, we talked about demonstrating command of the conventions of standard English capitalization, punctuation, and spelling when writing in different varieties of text. So, इस SLO के हवाले से इस टेस्ट में आपको कैपिटलाइजेशन के हवाले से क्वेश्चन मिलेगा और पंक्चुएशन के हवाले से भी आपकी प्रैक्टिस की जाएगी. आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको टेस्ट किया जाएगा. ऑलराइट. In the next SLO, comprehend and use contemporary idioms and proverbs in different texts and in their speech. So students, we split this lecture. We have split it in two lectures, lecture 3 and 4. एक लेक्चर में हमने idioms को डिस्कस किया था डिटेल से और अगले लेक्चर में हमने proverbs को डिस्कस किया था. Now idioms and proverbs, they are very much important कि आप इनके मीनिंग्स को समझें और इन्हें अपने सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करना सीखें. और उसके बाद हमने रीड टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे. इस लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में बात की थी और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और पैराग्राफ किस तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस एट द एंड. इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है एंड उसके साथ रेलेवेंट एसएलओ था गिव एन इन्फॉर्म्ड पर्सनल एंड एनालिटिकल रिस्पॉन्स टू अ डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट. इट मींस रीडिंग एनीथिंग दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड देन रिस्पॉन्डिंग टू दैट with in terms of answering the questions. So we have first of all MCQs, multiple choice questions of 12 marks. अब इन MCQs के अंदर आपको नजर आएंगे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि प्रोनाउंस उनकी टाइप से रिलेटेड हैं, idioms and proverbs से रिलेटेड हैं और मोस्टली दे आर अबाउट प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल नंबर 1, नीड टू फॉलो मी क्लोजली. अब कौन सा प्रोनाउन यहां पे आप करेक्टली प्लेस करेंगे? ए, यू, ही, शी और इट. स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर में स्पेसिफिकली pronouns के बारे में जिक्र किया था that they are was used as substitution for or in replacement of nouns so that हम nouns को repeat ज़्यादा ना करें. उसके बाद हमने pronouns की different types को देखा था. इसके बाद अब वही pronouns की different types जो concepts हमने पढ़े थे आप इसमें टेस्ट करेंगे. I have 3 mobile phones. This is the one that I was given by my brother. What type of pronoun is the word this? यहां पे जो प्रोनाउन है दिस वो क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, पोजेसिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है या इंट्रोगेटिव है? ऑलराइट. नेक्स्ट, Lewis, Luke and Thomas were crossed because had waited ages for the bus. They, them, he, it. So what is the right option? Those keys are mine. What type of pronoun is the word mine? Mine किस किस्म का प्रोनाउन है यहां पे वो आपने सिलेक्ट करना है. टू किक द बकेट. अब ये हमने idioms जब डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी डिफरेंट idioms. सो व्हाट डू यू मीन बाय द idiom टू किक द बकेट? डज इट मीन टू बाय अ न्यू बकेट, टू डाई, टू बी लकी और टू बी अनलकी? नेक्स्ट, again this is a common expression. This is an idiom, idiomatic expression. To break a leg. To break a leg means, number 1, does it mean wishing somebody good luck or curse someone, insult someone or express sympathy?
Then number 7, there is someone in my car. What type of pronoun is the word someone? Someone किस किस्म का pronoun है? अगर आप recall करें हमारी different types जो हमने पढ़ी थी pronouns की, कि इसमें someone किसके लिए इस्तेमाल होता है? Either it's reflective, indefinite, demonstrative or interrogative. Number 8, who told you to do that? What type of pronoun is the word who? Who यहाँ पे किस किस्म का प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव है, एब्सोल्यूट पोजेसिव है, रिलेटिव है या पोजेसिव है? I wonder why Harun rushed off. Did you upset? Now what is the right pronoun that we should use according to the subject over here, according to the right scenario? Number 10, blank, hope those flowers are for me. So यहाँ पे क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पे ये प्रोनाउन है यहाँ पे मी, तो हम कौन सा सब्जेक्ट का प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये आपने देखना है. ओपन द डोर, इट्स आई, दे, मी और शी. So what is the right pronoun? And lastly, Sarah wanted Lala to follow her, I, they or she. What is the right option? So after solving these given MCQs, here we have these 3 questions. यहाँ पे बिल्कुल भी कैपिटलाइजेशन का ख्याल नहीं रखा गया. आपने करेक्टली जहां पे जरूरत है, जहां पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स कैपिटलाइजेशन करनी है, वहां पे आप कैपिटलाइज इन सेंटेंसेस में वर्ड्स को करेंगे. And then number 3 question is use the given idioms in the sentences. You have these 3 idioms. They are very familiar. We have talked about it in the lecture. Under the weather, number 2, out of the blue, and number 3, a piece of cake. Alright, आप इनको अपने sentences में इस्तेमाल करेंगे, इससे आपकी understanding और idiom का meaning बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा. तो हमने उस तरह के sentences बनाने हैं जिनसे हमें हमारे इंस्ट्रक्टर को पता चले कि हमें उस idiom का मतलब बिल्कुल clear है. Use the given proverbs in the sentences. A cat has 9 lives. Action speaks louder than words. Absence does make the heart grow fonder. So these are very familiar proverbs. You have to use them in your sentences according to the context. Question number 5 में आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिस्पॉन्डिंग के लिए टेक्स्ट को आप इन कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. व्हाट इज द मेन आइडिया, द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, कि सेंट्रल आइडिया, मेन बात इसके अंदर क्या है. व्हाट डिड माइक मीन व्हेन ही सेड ही इज वाचिंग ऑल दिस फ्रॉम अबव. सो यू हैव टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, ही इज वाचिंग ऑल दिस फ्रॉम अबव. Now these questions carry 2 marks. Read the following paragraph carefully and answer the question that follows. So this was the last lecture that we did about structuring a paragraph, identifying different parts of a paragraph. यहाँ पे आप टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस को मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह वो सारा पार्ट पूरे पैराग्राफ में उसका क्या रोल है. व्हाट इज द रोल ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस, व्हाट आर द सपोर्टिंग डिटेल्स, व्हाट इज द कंक्लूडिंग सेंटेंस एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द whole paragraph. And lastly, for the writing prompt, you were given an exam when the invigilator caught 2 of your classmates cheating. Describe the whole situation. अब हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? What kind of writing are we going to use? Descriptive. Yes. Descriptive language, उसमें adjectives होंगे, details होंगी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में डिस्कस किया था. अब आपने 100 to 120 वर्ड्स की लिमिट के अंदर आपने ऐसी सिचुएशन को बयान करना है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. और आप देख सकते हैं कि इन द बुक चैप्टर नंबर 2, अ विजनरी लीडर, दैट होल टेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शनल. इट इज डिस्क्रिप्टिव. पूरे टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन है. तो इसी तरह डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में आपने डिटेल से हर चीज को बयान करना है. एंड दिस सम्स अप द होल वीकली टेस्ट फॉर this video, students. I wish you all the best and a very good luck to for your weekly test. I will see you next time in another video lesson. Till then, take care of yourselves and Allah Hafiz.